बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं जो लुक क्रिएट करूंगी तो उसका नाम है चौको लुक। और इसके लिए मैंने पहले से आईब्रोज बनाई हैं, मैंने अपना फाउंडेशन बेस लगाया है, सब कुछ किया है। बट आई मेकअप जो है तो मैं करूँगी आप लोग के सामने। तो इसके लिए जो है तो मैं यूज़ करूँगी ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट विच इज़ एक्सट्रीमली नाइस और बहुत ही पॉपुलर है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लाइट शेड यूज़ करूँगी फॉर माय ट्रांजिशन कलर और आई विल यूज़ जोएबा brush for this purpose and I will use it in my crease area, so I will blend it very well. So blending is must in makeup और ब्लेंडिंग जो है तो इसके अलावा इसके बग़ैर जो है तो मेकअप इनकम्प्लीट होता है और वही इफ़ेक्ट नहीं आता जो हम चाहते हैं। तो सो कीप इन माइंड के वी हैव टू ब्लेंड वेरी वेल। और मैंने थोड़ा सा लाइट शेड यूज़ किया है और ये है ब्राउन कलर। तो ट्रांजिशन शेड्स के लिए हम यूजुअली लाइट शेड्स यूज़ करते हैं, कभी कभार जो है तो हम डार्क शेड्स यूज़ करते हैं, वो तो कोई रेनबो कलर्स जो है तो हम यूज़ करते हैं, कोई रेनबो इफ़ेक्ट हो। अब मैं यूज़ करूँगी म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर विच इज़ इन ब्लैक कलर एंड आई एम यूजिंग इट ओनली ऑन माई लिड एरिया। और मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन रफ लाइन जो है तो मैं लगा रही हूँ क्योंकि देन आई हैव टू मिक्स इट विद ब्राउन कलर। सो आई एम यूजिंग जोएबा fluffy brush and this is a big fluffy brush, so I'm using it on my lid and I'm blending the black color and now I'm applying brown color and this is chocolate brown, so I have to mix both of colors और इससे एक अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। एंड एंड्स में भी आप लोग ब्लेंड करें, कोई भी हार्श लाइन जो है तो वो ना दिखे, बिकॉज हार्श लाइंस जो है तो बहुत बुरी लगती है फिर मेकअप में और इनकम्प्लीट लुक जो है तो क्रिएट होता है। सो आई एम यूजिंग अ स्मॉल ब्रश और ताकि इनर कॉर्नर जो है तो वो सही से मिक्सअप हो जाए। और एंड में भी मैं इसको करूँगी ब्लेंड एंड दिस इज़ क्रिस्टीन ब्रश। Christine brushes are also nice and Java brushes as well. So मैंने फ्लफी ब्रश लिया है, ये थोड़ा सा उससे छोटा ब्रश है। आई एम यूजिंग इट फॉर ब्लेंडिंग and still I'm using brown color and this is dark brown chocolate brown color and you can see I'm blending it. मेकअप का सारा जो दरमदार है तो वो है ब्लेंडिंग पर। एक ही कलर का मेकअप करें लेकिन आप लोगों ने ब्लेंडिंग ज़रूर करनी है। सो आई ऑलवेज फोकस ऑन ब्लेंडिंग एंड आई ऑलवेज टेल यू टू ब्लेंड। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कलर ऑन योर लोअर लाइन और हर जगह से आप लोग का मेकअप जो है तो परफेक्ट होना चाहिए। और मैंने लोअर लाइन पर ब्लैक कलर भी यूज़ किया है फॉर डेप्थ एंड फॉर डार्कनेस एंड these were two colors on my lower line. These were black and brown. So now I'm applying silver color and this is the bone and I will blend it. So both of the colors should be mixed because there should be no harsh line. That's why I'm blending it with my
Zoeva fluffy brush because there was harsh line, and I'm using this brush to remove that harsh line, and you can see there is a soft effect. And now I'm using aqua eyeliner, which is super pigmented, and the brush I'm using is a Crestine brush. And as you know, the Crestine brushes are very helpful. Or I'm applying aqua eyeliner, and I'm trying to make a wing. So this should be in a triangle shape. You can see this is just like drawing, और मैंने जो है तो wing create कर ली है. Then I have to make it neat and soft and clear. The line should be very straight, so I'm trying to make it very straight and dark. So I'm applying another coat on the same line, and you can see the results. So now I am applying BB cream with a flat brush of Zoeva to make the line very neat, clean and clear, and then I have to merge it. You can see it becomes very neat and clean. Then I will blend it very well with some kind of tissue or blender, whatever you want to use you can use. So I'm using a pepper for blending, so you can see the results. And then I'm completing and filling the areas which are not filled, and now I'm applying golden shade in my inner corner or in my inner V. Now I'm applying mascara on my lashes, so don't forget to coat your lower lashes. I think I have done, and I also applied false lashes, and you can see the result. This is my final look, and you can see the tassels. I'm setting it, so just ignore it. दिस इज़ माई फाइनल लुक. एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.